Good morning, students. Now, today is a same chapter relation and function, and now the topic is function. Yesterday I have discussed relation. Today, now the function. First thing, what is the definition of function? Then function from a set A to set B is a function if every element of set A has one and only one image of in set B. So now function is denoted by small f, and f is such that A tends to B, where set A is domain and set B is codomain. For example, f of x equals to x square, this is the given condition where x is a Blanck's domain. Domain is set A. Now, is a function. What is the meaning of function? Function, that is mapping. And mapping, that means image. For example, there are set A and this is set B. Now set A to set B by is mapping small f, right? And condition is given, f is such that natural to natural, and condition is given f of x equals to x square, where x is a Blanck's natural number, domain is natural number, codomain is natural number, but natural number now start from 1, then from x equals to 1, what is the value of f of 1 is the square of 1 is 1. Now substitute x equals to 2, that is f of 2 is the value of f of 2 is square of 2 is 4. Then now substitute x equals to 3, that is the square of 3 is 9, right? Student, x equals to 1, x equals to 1 रखने पर, then function is order pair 1 रखने पर 1, that means 1 is the image of 1, right? 2 रखने पर, that is a 4, that is a 4 is the image of 2, right? 9 is the image of 3, right? And so on, right? Now the 4 is the image of 2, 2 is the pre-image of 2. 1 रखने पर आपके पास 1 आया, that means 1 की image 1. 2 पे रखने पर 4, that is image of 4 is 2. 3 पर, that means एक element की only one image, that is function. So it is very clear. A relation from a set A to set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B is called function. Now look here, this is order pair. Function are different type function. First is the identity function. You know student, identity function, that means f of x equals to x. मतलब कि आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 इमेज 1 आएगी, x इक्वल्स टू 0 पे 0 इमेज, x इक्वल्स टू 1 पर 1 इमेज, x इक्वल्स टू 2 पर 2 इमेज, 3 पर 3. दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, इज ग्राफिकली मेथड, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, राइट? एंड सेम इज अनदर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन. नाउ इज अ कांस्टेंट फंक्शन, देन सपोज x इक्वल्स टू 3, right? X equals to 1, 2, 3. This is the x equals to 3 is the parallel to y axis, right? Y equals to 3 is the parallel to x axis. This is constant value, that means this is constant function. Now is the polynomial function. You know student, polynomial function, right? That is the f of x equals to x cube minus x square plus 2. This is equation is a polynomial, linear equation, quadratic equation, biquadratic, cubic. This is all polynomial function. Polynomial function, for example, y square equals to x square, this is the equation of parabola, that is the parabolic shape, this is polynomial function. So now is another function, is the rational function, right? Then is a p by q form, right? Modulus function, this is very important. Modulus function, you know student, modulus function, that is denoted by mod x, and mod x there are two values. अभी तक हमने ये क्लियर ही करा कि मॉड एक्स में पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाती है. सो नाउ मॉडुलस फंक्शन, you know student, modulus function f of x equals to mod x, and mod x there are two value, one is the positive, other is the negative.
But when positive x is greater than equals to 0 and negative x is less than 0. So this is the graph of modulus function. क्या आप x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, दैट मीन x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट इज 0. x इक्वल्स टू 1 पर 1, x इक्वल्स टू 2 पर 2, x इक्वल्स टू 3 पर 3. दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू f positive x. But now the negative x, x equals less than 0, and x equals substitute x equals to minus 1. That means x equals to minus 1, y equals to plus 1. X equals to minus 2, y equals to plus 2. This is V shape. This is the modulus function. Same is the greatest integer function. You know, student, greatest integer function is denoted by f of x equals to this big bracket में what is the meaning of greatest integer function? That means x is less than equals to 0. So now is the greatest function. Suppose x की value 2.1, 2.3, 2.5, then is all the value is 2. Why? Greatest integer का मतलब x की value between 2 to 3 है, that means 2 count होगी. 3 to 4 that is 3, 0 to 1 that is 0. So this is the greatest integer function. इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है. This is greatest integers, right? This graph, right? So this is greatest integer function. Now look here. Function में first thing, right? In the first question, write the following relation are function or not. Give the reason, right? हमने आपको क्लियर करा कि अगर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, that is called function, right? So then 2 is the image, 1 is the image 2, 1 is the image of 5, 8 is 1 is the image 8. This is not function, right? But 3 is the image of 1, 1 is the 5. This is not function, right? Now find the domain, and this is very very important. But उससे पहले, now discussion question number 3rd and 4th are very easy, and exercise 2.3 question number first is only basic, which is function or not. So now look here. Question number 3rd. Function f of x equals to 2x minus 5. F of x is given 2x minus 5. And find the value of f of 0, f of 7, f of minus 3. So it is very simple कि आपके सामने function given है f of x. Question number 3rd, f of x is given 2x minus 5. Now substitute x equals to 0, then find the value of f of 0. Put x equals to 0, so f of 0, 2 into 0 minus 5, that is minus 5. And now find the value of f of 7. Now substitute x is 7, then 2 into 7 minus 5. 2 7s are 14 minus 5, that is 9 is the value of f of 7. Same is the value of f of minus 3, that is 2 into minus 3 minus 5, minus 6 minus 5, that is a minus 11. This is answer. Same question number 4. But now question number 2nd is a very very important. Find the domain and range of the following function. Now look here student, domain or range. देखो स्टूडेंट, जो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, दिस इज डोमेन, राइट? बट जो इमेजेस आती हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड रेंज, राइट? रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. यस्टरडे ऑलरेडी डिस्कस की रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने क्वेश्चन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स. फाइंड द डोमेन एंड फाइंड द रेंज. स्टूडेंट, वेयर एक्स इज अ बिलोंग्स टू रियल नंबर. You know student, real number, all numbers are real number except iota or infinity. Suppose अगर real number यहाँ 0 रखते हो, then result is 0. 1 रखते हो, that is the result is minus 1. 2 रखते हो, that is the result is minus 2. यानी आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखते हो, then result नेगेटिव आ रहा है. यानी कि आपके पास में यहाँ पर इस क्वेश्चन का डोमेन, कि आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, फंक्शन डिफाइंड हो रहा है. दैट मीन्स डोमेन ऑफ एफ इज ऑल रियल नंबर. आप ये कह सकते हो रियल नंबर, या अदरवाइज इसी आंसर को माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इज द मीनिंग, दैट इज द रियल नंबर. या आप ये कह सकते हो एक्स इज अ बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इज, दिस इज डोमेन. But result is always negative value. So what is the range? Image is only negative. So range of f is only negative real number. Negative real number, that is the minus infinity to 0, right? So this is range.
Now is another example. F of x equals to under root 9 minus x square. राइट स्टूडेंट, अब आपको फाइंड करना डोमेन और रेंज। ऐसे क्वेश्चनों में डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं? जब भी डोमेन फाइंड करना हो तो ध्यान रखना कि वेयर x इज अ रियल। अब x इज अ रियल दैट मीन्स y इज अ रियल। y इज अ रियल दैट मीन्स f of x इज यानी y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। f of x की वैल्यू आपके सामने है अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करोगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इनइक्वलिटीज में माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9। कोई भी इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना हो, अगर बोथ द साइड नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज पॉजिटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 9, राइट। इनइक्वलिटीज का साइन चेंज, बट नाउ स्क्वायर रूट करते हैं तो देयर आर टू वैल्यू। 9 का स्क्वायर रूट इज अ प्लस माइनस 3। इसका मतलब ये है कि आपके पास में मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब मॉड एक्स की दो वैल्यू होती है, अगर सपोज पॉजिटिव लेते हो तो दैट इज द फर्स्ट आंसर इज एक्स लेस देन 3, बट नाउ इज अ नेगेटिव माइनस एक्स इज लेस देन 3, सो दैट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3, राइट। बोथ द साइन नेगेटिव साइन से बोला लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डोमेन है वो x इज लेस देन 3 और x इज ग्रेटर देन -3, -3 से ग्रेटर देन वैल्यू -2, -1, 0, राइट। सो व्हाट आर द डोमेन ऑफ f? दैट इज x is between -3 to +3. This is domain, right? So student, please solve exercise 2.3 domain, range, function, right? Thank you.